Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be fine at your home. This is English time. In English time we are going to start new topic, singular plural. Singular plural. The topic is singular plural. Like this. This is single color. A single color means a noun to a single person, place, thing or an animal. A singular noun refers to a singular person, place, thing or an animal. Now I have more than pencils or colors than one. Like this. Colors. These are plural. A plural noun refers to more than one place, person, thing or animal by simply adding s. Singular, plural. Another example like this: coin, coins, coin, coins. Dear students, a singular noun refers to single person, place, thing or an animal, and the plural noun refers to more than one person, place, thing or an animal by simply adding s. सिंगल थिंग के लिए जब कोई सिंगल थिंग होती है तो वी विल यूज अ सिंगुलर नाउन, और प्लूरल के लिए जब आप s ऐड कर देते हैं तो वो थिंग जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाती है, वो बन जाती है थिंग्स. कलर, कलर्स, क्वाइन, क्वाइंस, बुक, बुक्स, बुक and books. Okay. Now dear students, open the page number 97 of your English book. The topic is singular plural. A singular noun refers to a single person, place, thing or animal. Girl, boy, got, shop, cup. और जब आप इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ, इन थिंग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, पर्सन्स के साथ, प्लेस के साथ, लाइक दिस शॉप इज अ प्लेस, गर्ल इज अ पर्सन, गॉड इज एनिमल एंड द कप इज थिंग. जब आप इनके साथ एस ऐड करेंगे तो आपके पास प्लूरल फॉर्म में थिंग्स आएंगी, लाइक गर्ल्स, बॉयज, गोट्स, शॉप्स, कप्स. कप्स. It's very simple. When we add s, the form is plural, and when anything is without s, this is singular. The next page is page number 98. Dear students, page number 98. Look at the pictures and circle the correct word. This is a picture of drum. You will find this picture is singular or plural, like DRUM, drum, DRUMS, drums.
drums. This is only single picture, so that's why we will circle drum, the word drum, because this is single thing. Now moving towards next picture. These are one more than. These are more than one. These are more than one. N-E-T, net. N-E-T-S, nets. We will circle nets because these pictures are more than one. ये एक से ज्यादा है, इसलिए हमने नेट्स को सर्कल किया. नाउ नेक्स्ट, ओनली वन, सिंगुलर, ओनली वन थिंग. नेक्स्ट वन इज मोर देन वन. ये एक से ज्यादा है, सो दैट्स वाई प्लूरल फॉर्म. इसी तरह आप ये पूरा पेज डन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पेज इज 99, पेज नंबर 99. रीड द sentences and complete them by circling the correct word. ये आपके सामने एक पूरा सेंटेंस है, 7 पिक्चर्स हैं. आपने सेंटेंस को देखते हुए और पिक्चर्स को देखते हुए करेक्ट वर्ड को सर्कल करना है. लाइक दिस, देयर आर सो मैनी एनिमल्स इन द जू. जू में एनिमल होते हैं या एनिमल्स. यहां पर पिक्चर एनिमल्स की है. एनिमल्स वर्ड को यू विल सर्कल द एनिमल्स. You will done page number 99 by this methodology. Next one is we are going to start notebook work like this. You will write singular plural on your English notebook. First of all, you will write topic, then you will draw margin in the center, singular, plural, singular, plural, girl, girls. You will add the S in the plural, boy, boys, cup, cups, shop, shops. You will done this one page on your English notebook and learn again and again and write on the rough notebook. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.